बैक टू माई चैनल एंड आज मैं आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो के साथ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग बाथ क्या क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बिफोर माई मेकअप एंड बिफोर गोइंग आउट। सबसे पहले मैं नहाई हूँ तो आई एम दीज डेज loving these two products. So basically one is a cleanser from Light Up and the other cleanser is from the Beauty Sailor. This is the first thing you should use on your face in the morning. So आजकल मुझे green tea and green juice avocado products बहुत अच्छे लग रहे हैं because it's summer time और हमें थोड़ा अपनी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखना है एंड प्लस ज़्यादा ऑयली नहीं रखना होता है. So I am liking these two cleansers very much. Okay, so after this, moving on to the next thing, I am really loving this refreshing toner from Khadi Veda. So I just, now I've done my cleansing part, so I'm just going to spray it just like this. And ये लगाते ही मुझे एकदम fresh feel होता है. It feels so good after applying this. You just have to dab a little and wait for 2 minutes to dry it out. Again this toner is mint cucumber. So अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मुझे ये सब mint cucumber, avocados, green teas ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और ये सब natural products है basically. So ये सब paraben free और I prefer paraben free and sulfate free products mostly. And sometimes I also prefer the cruelty free products जिसमें कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं होती है और वेगन होते हैं प्रोडक्ट्स. सो आई एम मोर इनटू दोज प्रोडक्ट्स. सो मुझे बहुत मज़ा आता है लगाने में. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग अ लिटिल मोर फॉर यू गाइस. ओके, सो लेट्स ट्राई. मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोगों को लगाना होता है फेस पे सीरम. सो मॉर्निंग टाइम है, वी शुड नॉट यूज़ रेटिनॉल सीरम और हाइलुरोनिक एसिड सीरम. तो ये दोनों सीरम बेसिकली नाइट टाइम के लिए हैं. मेरे पास मोस्टली रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड वाले सीरम्स हैं. बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू यूज़ इट इन द डे टाइम. वैसे आप यूज़ करते हो अगर बहुत लाइट तो आप उसके ऊपर अगर सनस्क्रीन लगाओगे तो दैट विल बी फाइन, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. सो उसकी जगह पर आई यूज़ दिस केमिस्ट एट प्ले का niacinamide, but very rare. Sometimes in the morning, mostly I use it at night. Or otherwise I use this Gyno Veda ka gold serum. This is very light and dewy kind of. So I prefer this in the daytime because this is for the day basically. And otherwise if I'm using this one, Chemist at Play ka acne control face serum, तो मैं बहुत लाइट यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में एंड आई अप्लाई इट एंड देन आई ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू अप्लाई माई सनस्क्रीन आफ्टर दिस. सो अभी मैं यही लगाने वाली हूँ टू शो यू द टेक्सचर. आई गॉट इट इन द PR, सो आई लव्ड इट एंड आई एम गोना ऑर्डर वंस अगेन बिकॉज ये बहुत अमेजिंग है, लिटरली बहुत अमेजिंग है. तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है. आई जस्ट टुक 2 drops and I'm gonna use it just like this. तो इसको आपको धीरे धीरे अपने फेस पे डैबिंग मोशन में आपको इसको अप्लाई करना है. एंड यू कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ मसाज. सो आई लव अप्लाइंग सीरम्स एवरी डे in the morning and at night because this gives hydration to the skin. This keeps your skin smooth, shining and beautiful, glowing basically. So after my serum I use this moisturizer on my face, a little bit of moisturizer because it's too hot. I'm not using a lot of moisturization on my skin, but my skin is dry and it needs moisture. And I think oily skin टाइप वालों को भी थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र एवरीडे रूटीन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइज़र इज़ नेसेसरी. और सिर्फ आउटर स्किन केयर इज़ नॉट जस्ट द थिंग. यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड.
and especially in the summer. So let's apply this moisturizer. This is quite watery kind of water based moisturizer, so ये उतना ज़्यादा oily नहीं है and mattifying moisturizer है basically, so it's very good for the summer time. And मैं इसको just dabbing motion में ही लगाऊंगी because मुझे ऐसे लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे ज़्यादा I think skin absorb कर पाती है. And उसके अलावा then I rub it a little bit and in a very soft way. I let the moisturizer absorb a little into my skin because moisturizer जब तक absorb नहीं होता आपकी skin में तब तक वो आपकी skin को moisturize कैसे करता है. So you need to give it a little bit of time to get absorbed into your skin. So itna moisturization is very important for your skin. And after that, my skincare is very simple and easy. After that is the last skincare product that I'm going to tell you, which is very 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 important, and it's the sunscreen. So I'm using Wow Sunscreen Matte Finish 55 SPF. So this one is also paraben, silicones and mineral oil free. So I love using products which are chemical free basically, and this is SPF 55, which is good and it's for all skin types. So I take sunscreen a little bit, long it once again. I take it a little bit. और sunscreen को मैं एक साथ नहीं लगाती because sunscreen थोड़ा बहुत आपकी स्किन को एकदम वाइटनिंग इफेक्ट देती है. सनस्क्रीन मुझे ऐसे लगाना पसंद है, थोड़ा सा फिंगर पे लेकर एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन वन साइड ऑफ माई फेस, देन आई अप्लाई इट ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, and if you have remaining in your hands then you can apply it on your body wherever it's necessary. When I wear a deep neck, I apply it all over my neck and my hands, everywhere which is visible place on your body, because you need protection there also. So this was the final product for today, which is the sunscreen, and I think that's all for today because ये मेरा small सा skincare routine है. I just hope you guys loved it, and if you guys liked it, you can tell me if you want my night skincare routine also. कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए एक नाइट स्किन केयर रूटीन वीडियो भी बनाऊंगी एंड वीकेंड स्किन केयर रूटीन भी बनाऊंगी. सो यू गाइज कैन टेल मी आउट देयर. और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाकर. दिस वाज अ वेरी डिफरेंट वीडियो फॉर मी and I had a lot of fun. I hope you guys enjoyed my video. So do like the video, share it with your friends and family, and do comment. And don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon.